We will start with Windows. I hope the screen is visible. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So, as I said, like we will be beginning with Windows management with Intune today. So, before we start our session, it is first important for us to know how Microsoft envisions Windows modern management, right? Because we are talking about Windows modern management. So we first have to know the end state of how, like Microsoft, how they depict that end state. What do you mean by a modern managed Windows device? So in that sense, a modern managed Windows device, as per Microsoft, is a device that is provisioned via Autopilot, that is cloud native, so it has no on-premises domain or anything. It is managed completely by cloud and not via on-premises group, and a device that is serviced from the cloud. So a device needs to meet all these four parameters to be considered as a modern managed Windows device as by Microsoft. Now there are other services which will come into play. Maybe you can say like the device that is secured from the cloud, so the device should also be in Defender for endpoint and things like that. But those services are something that are extra. If I talk about what are the pure requirements of a modern management device, then these four are the pure requirements of a modern management device. It should be provisioned with autopilot, it should be cloud native, it should be managed by MDM, and it should be serviced from the cloud. Correct? Got it? Yes, yes, sir. Questions? Yes, sir. Okay. So obviously we get started with Windows 10 or Windows 11 management. Both the operating systems, like they have a different user interface, obviously, but under the core they are running the same you say kernel. So there is not much differences between Windows 10 and Windows 11 in terms of management. What you can do with Windows 10 is also what you can do with Windows 11. Uh, Subject to there are some conditions applied, so which are again related to the user interface. For example, in Windows 10 we can do a start menu configuration. In Windows 11 we cannot. In Windows 11 we can instead do the taskbar configurations, things like that. Because the start menu of Windows 10 and Windows 11 are different, which is again something related to the user interface UI and not the OS. But if we move forward, we know mobile devices, when we have talked, mobile devices are something when we are managing them, they can, like in how in Azure AD, what do you see a mobile device as? Does it comes as Azure AD joined or comes as Azure AD registered? Are you ready registered? So mobile devices, iOS or Androids, they can only exhibit a single type of device join state, that is Azure AD registered. But a Windows device can exhibit multiple device join states in Azure. So the first, like they can exhibit multiple. So can you help me like how many? Just a like fair idea. How many join types can a Windows device have? Azure AD join, hybrid Azure AD join, Okay, and and Azure Azure AD. AD registered. okay, and no issues. So the first state of a device.
Like when we are just talking about the device, it's not joined to a domain, it's not joined to a cloud, it's not registered to a cloud. The first joint state of a device is that it is a workgroup PC. The next that comes is that it can be domain joined, right? Yes. The next thing that comes is like I can do a Azure AD registered. So this makes it a BYOD device. So I'm just registering it to Azure AD. The next state can be an Azure AD joint state. And the last state is obviously a hybrid Azure AD joint. So there are five different joint states that you can see for a Windows device. Now, of these five different joint states, a few joint states can coexist with each other. So, for example, a workgroup PC can be Azure AD registered, a domain joint PC can be Azure AD registered. But similarly, like you cannot Azure AD register a Azure AD joint or a hybrid Azure AD joint PC, right? So on a workgroup PC means basically the device has a local account setup. It's not connected to any domain. I can go into settings accounts and I can connect my work account. So that makes it Azure AD registered device. So the device is a workgroup PC plus an Azure AD registered PC. Similarly, for a domain joined PC as well as PC that is joined to the domain, I can still go to settings accounts and connect my work account, which will do a Azure AD registered. But if a device is Azure AD joined or in a hybrid Azure AD joined state, I cannot go into settings and connect a work account there. It won't get registered. So these are all the different joint states a Windows device can live with. So now that a Windows device has different joint states, so there must also be different ways to enroll Windows devices, right? Yes. So help me with the different types of enrollment that we can do with Windows. One enrollment can be done means manually user can do, and that is Uh-huh. Other, another is hybrid Azure AD joined or this is again a joint state. yes, yes. Automated So, enrollment. so a hybrid Azure, yeah, that is Automatic automatic enrollment. enrollment. So manual enrollment or automatic enrollment, or there cannot be another type of enrollment that is like enrollment via provisioning package, which is a userless enrollment. That can also be done. Mhm. But let's see. So the first we will focus on automatic enrollment, and this automatic enrollment works for which joint types of the devices. Is that basically you can have Azure AD registered device, Azure AD registration with auto enrollment, MDM auto enrollment. Similarly, Azure AD join you can have auto enrollment with. You can have autopilot doing the auto enrollment as well. And the last one is the bulk enrollment, which also comes under auto enrollment, which is from Windows Configuration Designer, is what I was talking about the provisioning package, a PPKG file. So this all comes under auto enrollment. Then we also need to look into the manual enrollment ways. And in manual enrollment, what is the enrollment that is possible? Azure AD registered. Registered BYOD. If say your automatic enrollment is not enabled,
you do a Azure AD registered device or you do a Azure AD join, uh, in Azure AD the device state will come under as ADJ yes or Azure AD registered yes, but under MDM column it will come as no. So if the device is already registered or uh, joined, the only thing that you can do to get that device enrolled manually, if automatic enrollment has not happened, is via an MDM only enrollment, the option that we uh, work very less, right? We generally do not work on MDM only enrollment. But again, MDM only enrollment is possible for a domain joined device, for a Azure AD registered device, or a Azure AD domain joined from out of box device, and from a Azure AD domain joined from Windows settings, as well as from hybrid Azure AD joined. Why there is no autopilot in MDM only enrollment? Because if your auto enrollment is not configured, autopilot will fail from the beginning. So you cannot have a autopilot device in a Azure AD join state yes and MDM enrollment equals to no. Correct? Clear till now? Or any Yes. questions? So what can be another type of enrollment? Any idea? Yeah. Group policy enrollment, another kind, and we do that for existing hybrid Azure AD join devices, right? Yes. And then there is one more enrollment type that is possible, which is called as deep link method. And this method works for domain joined device, Azure AD registration, as well as Azure AD joined. So you need to run that particular command, MS device enrollment mode equals to whatever you specify, DJ, AADR or AADJ, and the device will get enrolled. Do we have another type of enrollment? Joy through configuration manager means That it's is under auto enrollment, bulk enrollment, Windows configuration designer. okay. Well, the another form of enrollment that you can do is what we do from for our mobile devices is via the company portal. Yes, for Windows devices as well, we can do a enrollment from company portal, but it's something that we don't do generally. Mostly what we do is auto enrollment with Azure AD Join, auto enrollment with hybrid Azure AD Join, and auto enrollment with Azure AD registered. These are the three cases that we mostly use in general, like 90% of the time. But all the other enrollment methods still exist for Windows, and this can be used. And then that table basically shows you the device ownership type and the user interaction required for each of the enrollment methods that we have discussed. So if we are doing a manual enrollment, then the device ownership will come up as personal and user interaction required equals to yes, because obviously the user needs to do the steps. Auto enrollment, device ownership comes up as personal, user interaction is required yes. Um, Here auto enrollment, the device ownership is personal for which case? BYOD.
Yes, devices. so if we are doing an auto enrollment with Azure AD registered device, then it comes up as a personal device. But if we are doing auto enrollment with Azure AD join, then the ownership will come up as corporate. Group policy enrollment comes up as corporate, and user interaction is not required because the user does not need to actually sign in. Autopilot, again, like any kind of autopilot that you are doing, it comes up as corporate and user interaction is required unless you are doing it deploy mode, which is in preview. That co-management, again, device ownership will come up as corporate. User interaction is not required. Deep link, device ownership is personal. User interaction is required. Company portal application or from the company portal website, you can do enrollment as a personal, and user interaction is again required. And for the provisioning package method via Windows Configuration Designer, ownership will be corporate. User interaction is not required. So Windows can have multiple join states. Windows can have multiple enrollment methods. So I think this is clear for everyone, right? And just one question, Joy. Probably Yeah. the first part that we have said that the manual enrollment can only be done for MDM only devices because you cannot, there will be no Azure ID created, correct? In that case, and it will be the Intune ID probably. So does it come Yeah. with lot of limitations in that case because there is no Azure AD ID created since, or when it is preferred to have this only MDM only enrollment? MDM only enrollment you can have if your device does not needs to be evaluated for compliance, or like there is no conditional access. So in such case, you can do MDM only enrollment. Uh, Otherwise, it's of no use because it will get blocked by conditional access. Okay. That is the reason why we don't do MDM only enrollment. And what is the means? Does deep link are significantly used still, Joy, that we are mentioning uh, as a part of enrollment? Deep link, yes, deep link is used in some cases. So there are uh, Windows core operating systems which does not comes with UI, which are there on factory floor devices and things like that. In such cases, you won't be able to get to start menu, account settings, and things like that. So how will you uh, enroll such a device? In such case, you can use the keyboard like Win plus R. You get the run box, and then you type in the code that you need, and it will do the enrollment. Thank you. Uh, Now I have a question for you guys. Yes. I have talked about the different join states of a device, and I have talked about the different enrollment methods of the device. Now tell me, is hybrid Azure AD join, like to have a device co-managed, do I need to have a device in hybrid Azure AD join? Answer. क्वेश्चन सुनाई दिया ना सबको? Yes, Joy.
हाँ, तो अभी Yes. आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि इज हाइब्रिड एश्योरिटी जॉइंट must requirement to have a device in co-managed state. So for तुम लोग मुझे Joy, हाँ या ना बोलो। no, but if my understanding, even we can manage from Intune for the for hybrid Azure AD join. For that, we doesn't require a co-management to configure. For Intune also, we have an option to domain join type, right? Hybrid Azure ID and Azure AD, AAD join. So we can No, manage. my Yeah. question is very specific. Okay. My question is that in order to have a device in a co-managed state, does the device needs to be in a hybrid Azure AD join state? This question has a very specific purpose. तुम लोग कुछ भी आंसर दो, इसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगा, मैं बाद में ही दूंगा आंसर। बट मैं सिर्फ तुम लोग से आंसर जानना चाहता हूँ, वो तो एटलीस्ट बोलो हाँ कि ना, तो कि मैं आगे जाऊँ इससे। ठीक है, मैं बोल देता हूँ हाँ. You don't need. Like It's a wild guess, Joy. I'm not giving any logical answer right now. ठीक है, इसका आंसर मैं बाद में दूंगा, बट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से मैं यही बोल सकता हूँ कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन अ विंडोज जॉइन स्टेट एंड अ विंडोज मैनेज स्टेट। ठीक है, there are a few of the management states and a few of the domain join states that are very hardly coupled with each other, like वो स्कूल कॉलेज के टाइम में वी हैव लर्नड अबाउट लाइक हार्डली कपल्ड एंड लूजली कपल्ड कॉन्सेप्ट। ये कपल मतलब वो वन टू पेयर वाला रिलेशनशिप वाला कपल नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उसी में there are a few join states and the management states which are hardly coupled, like Azure AD join with auto enrollment is a hardly coupled state. Azure AD registered with auto enrollment is a hardly coupled state. Autopilot is a hardly coupled method. But I have a domain join device or my auto enrollment is not configured. In such cases, whatever be the management state and the join state of the device, those are loosely coupled, since they do not have a relationship with each other. In that same case, when we come to co-management and the device join state, I will come to the answer later, but they are loosely coupled. Okay, but now get started from here. So the next stage is we have talked about auto enrollment. So what is this auto enrollment? In the portal, where do we get this auto enrollment settings? Hello, one, two, three. Yes, Joy. In Azure portal also there is a Azure and the Azure
portal, there is a MDM enrollment settings. So where we can able to enable MDM enrollment to all fuse enrollment auto enrollment settings. The same way we can do it from Intune portal also. Devices may Yeah. enrollment then automatically. So Yes. we are This, basically, when we talking about auto enrollment, we are talking about the MDM scope and the MM scope. But this is the same settings that you get to configure from the Intune portal as well as from the Azure AD portal. There is one difference in the Azure AD portal. When you configure this from the Intune portal, you are basically opening an extension of the Azure portal within the Intune console and you are configuring this. So you are configuring the MDM and the MM user scope of Intune. But when you go into the mobility settings of Azure AD Blade, and from there you will see like you can have multiple entries. So you can have Microsoft Intune. If you are having another MDM or UM server service used in your thing like Workspace one, you can have that entry as well. And each of these MDM and UM services will have their own MDM uh, and MM user scope. So for example, why am I signed with Outlook? From here in enrollment, you get to Windows enrollment and you get this automatic enrollment settings configure, which basically gives you that same MDM and the MM user scope. But from Azure Active Directory, if you go, ah, wait, let me sign out of sign to. When you go into mobility MDM and MAM, this one that you are doing MDM and user scope is the same what you did here. Right? These two are in sync. But here you can have other MDM solutions as well added in. So for example, you can have manage engine or whatever that is. So it will add the application, create the enterprise application for it. And now you will have a MDM scope for your manage engine MDM as well. Right? So it's not the same of how you configure the MDM and MM user scope from the Azure portal and from the Intune portal. When you do it from the Intune portal, you are doing it for Intune. When you come from the Azure portal, you will need to have a conscious choice of which service you are configuring for. It's very much possible that you have multiple MDM services like this running in the environment. And in such cases, if you have the MDM user scope set to the same group for both the services, then it's a conflict. You need to keep a tab on that. And
In which circumstances do we get to see an environment where there may be multiple MDM services here in Azure? Any idea? For example, I will say, I uh, let's just consider we have an environment where um, we are using the Microsoft productivity applications. That means Exchange, SharePoint, OneDrive. However, device management is via Workspace ONE. And now, like you have also acquired Intune licenses, you see that the running cost of Workspace ONE or the licensing cost does not make any sense to go to a different vendor. So you will be migrating your devices from Workspace ONE to Intune. In such cases, you will see multiple MDM services configured within the same Azure portal. Here, Yes, John. Yeah. so now let us consider that you all guys are new to Intune. So there is always a confusion when it comes to configuring the MDM user scope and MM user scope and what these scopes do or which one to use. So tell me, does it whatever change I make to these particular settings, MDM user scope or MM user scope, does it affect my iOS, Android, and macOS devices? No, Joy. Correct. So it only applies to Windows 10 devices or Windows 11 devices. Windows Why it devices. does not apply? No, not Windows devices. Only Windows 10 and Windows 10 or later devices. Windows 7 devices are not even considered. Or below down level devices. Yeah. So let us see, like a user is starting uh, whatever that can be, say starting to set up the device and is going through the authentication process during the provisioning. So the authentication, like if you remember the flow I showed you during the mobile times, the authentication will go to Azure Active Directory and Azure Active Directory will respond back with a, if obviously if the authentication is successful, it will reply back with a token that will have the ID token and the access token. It, the token is it's a Java Web Token, will look something like this. Now the last three parameters in the token is the one that comes for Windows devices, and the value of those three parameter depends on the settings that you configure in here. So if you do not configure MDM user scope, or say for example your MDM user scope is none, then the MDM enrollment URL parameter will not have any value in it. So it will be null. So the device will not go for any enrollment because it does not have an enrollment URL. This is how the settings you do in here affects how your devices are getting provisioned. Is this clear? Yes. Yeah. So now we will go into understanding the MNIM and the MM user scope. We consider that user is part of the MDM scope that we have configured. So when user goes for the device registration process, um,
It will also get the access token that it gets back will contain the MDM enrollment URL. So that is why the device will also get automatic MDM enrollment to the enrollment service that is configured. This is how the MDM user scope works. But say now that the user is part of the MM user scope. In such case, when the device does the device registration process, it will not contain the MDM enrollment URL. So the device will not get enrolled to Intune. Um, in some case, if the user is part of the MAM URL, it will get MAM only enrollment to Intune, which is basically like which was used previously for Windows information protection, which is not used anymore. And in these scenarios, if you want the device to be MDM managed as well, then you can go ahead and do a manual MDM only enrollment to the device. So I think this is clear. Yes. So on the left side, we have seen when what happens when the user is part of the MDM user scope. And on the right side, we have seen what happens when the user is part of the MM user scope. So now what happens when the user is part of both? Joy, so can you just explain that MAM user scope, the previous diagram? Yes, that part. Yeah, Which one? yeah, this one, the on the right hand side, the MAM user scope. When the user is in MAM user scope. Yeah, so when the user is part of the MM user scope, when the device goes for the device registration process, the authentication response back to the device, the token that the device will get, it will not have the MDM enrollment URL because the user is not part of the MDM user scope. So the device will not get a MDM enrollment on the other side. However, when we configure the um MM user scope, say for example, MM user scope is not set to none, but it's set to some, and there is some group selected. Then it gets the MAM discovery URL which is configured in here. So this was previously used for Windows information protection only enrollment, but so for this particular scenario, if that is the case, then the user or the device gets the MAM only enrollment, so it is not doing a MDM enrollment. But if you want to do a MDM management of the device as well, then you can go and manually enroll the device into MDM only enrollment. That is the case. But now what we have talked about in this particular slide is when the user is part of the MDM user scope, and the other is when the user is part of the MM user scope. So these are two separate scenarios. The next slide which we are talking about is when the user is part of both. And this can happen when we either do MDM user scope to all and MM user scope to all. If this is how we set it, then the user becomes part of both the MDM and the MM user scope. Or if we select to some and in the group selected we choose the same group, then also this criteria or condition occurs. Correct? Yes. So now user is part of both the scopes and the device goes for the registration process and the authentication happens. Now, based on this, can you tell me what will be the device enrollment behavior? This is question to you guys. So for uh, corporate joint devices, MDM enrollment will take place because it takes precedence. And if you're doing BYOD or just the MAM, will take precedence over MDM.
in that case. Correct. So when user is part of both the MDM and the MM user scope, uh, the device registration process will then look into the ownership of the device. If it determines that the ownership of the device is corporate, then it will get the MDM enrollment URL and the device will get automatically enrolled to Intune. However, if it determines that the device ownership is personal, then it will do a MAM enrollment. And again, like if it does a MAM enrollment, you always have the option to manually enroll to MDM as well. So from this slide comes another question. Can you tell me what that question is? So like why we have MDM and MAM to enroll to make it up. No. The question is, I told if the MDM user scope and the MM user scope is in a conflict for a user, the service checks the device ownership, whether it's a corporate device or whether it's a personal device. And based on that, we have two different outcomes. So the first question that comes from this slide is how does the service determines whether a device is corporate or personal? So how does Intune determines whether a device is corporate or personal? Do you know? In case of mobile devices, we have seen if we are doing a enrollment via company portal, the device ownership comes up as personal. Based And on the if we are enrollment doing process. based on the enrollment process, Process. yes. So Yes. if we are doing a Apple Business Manager enrollment, then it comes up as corporate. Uh, but also, like if we are doing a company portal enrollment, but we have the serial number of the device listed in the corporate device identifier, then also it can determine the device ownership as corporate. But in case of Windows, so how does Intune determines what is a corporate? Uh, like if the device is coming from this type of enrollment, then it should be tagged as corporate. Otherwise, it should be tagged as personal. So what are those enrollment methods? Azure AD joined devices through auto enrollment. Hybrid Azure AD joined devices through auto enrollment or Good. So GPO these based are all portal. the Okay. these are all the enrollment process that Intune will consider to tag the device as a corporate device. So similarly, then we also have personal. So what are the enrollment types that will go for this particular type? Company Company portal website, portal. deep link you said. Deep link comes for deep link is just a way of how you are running the Mhm. how you are initiating the process. But at the end, deep link can initiate Azure AD registered, Azure AD joined, and hybrid Azure AD joined as well. So
If I'm initiating a Azure AD join process with a deep link, then it will come under corporate. But if I'm initiating a Azure AD registration with a deep link, then it will come under personal. So Okay. automatic enrollment via Azure AD registered device is a personal. MDM only enrollment is personal. And again, a domain join device is a personal. In terms of Active Directory, a domain join device is termed as a corporate device, but in relation to Intune, it does not gives a shit about whether the device is domain joined or not because it does not make any sense to Intune. So it tags a domain joined device as a personal device. So clear how Intune identifies the device ownership, and based on this is how the MDM and MM user scope is determined. If the user falls part of the same group to which the MDM user scope as well as the MM user scope is applied. Think that is clear? Yes, Now, yes, Yeah, yeah. yes. Yes, sir. Yeah. तो आते हैं, we will first come and understand the Azure AD register state. So we basically register the device to Azure AD without requiring the organizational account to sign into the device. It is applicable to all users. Primary falls under BYOD. Device ownership remains with user. Operating system, it's Windows 10, Windows 11. That's okay. We can initiate the provisioning from settings. End user device signing is the local credentials of the end user. We are not using the work account credential to do the Windows signing. Now the capabilities it provides is like it gives you SSO to your corporate resources, and since the device is evaluated for compliance, so it can also get you through conditional access. So this is how a Azure AD registered device looks like. नेक्स्ट स्क्रीन इज डेमो, बट इसका डेमो क्या तुम लोग को दिखाना पड़ेगा कि एज्योर रजिस्टर करके किए हो ना कभी? हाँ, 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 किया। वर्क स्कूल अकाउंट में जाके किए। सेटिंग्स में जाके, अकाउंट्स में जाके, या सिमिलरली नेक्स्ट स्टेट है एज्योर जॉइन स्टेट। अच्छा, प्राइमरी डिफरेंस ये मुझे बताओ, एज्योर रजिस्टर्ड वर्सेस एज्योर जॉइन में जो प्राइमरी डिफरेंस आता है वो क्या है? आप लोकल उसमें लोकल 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 अकाउंट से अकाउंट लॉगिन कर लॉगिन से सकते लॉग हैं कर सकते हो। हाँ। रजिस्टर्ड में, इसमें नहीं कर सकते। हाँ, तो वी साइन इन यूजिंग द कॉर्पोरेट क्रेडेंशियल्स। होम एडिशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, those are not supported. Pro, education, enterprise, those are supported, but home is not, both for Windows 11 and Windows 10. Provisioning can be done via three methods. So out of the box, or settings, bulk enrollment, as well as Windows Autopilot. अच्छा, सेटिंग से भी हम लोग एज्योर ज्वाइन कर सकते हैं। तुम लोग ने किए हैं? Like we can not only do a register from settings, but we can also join Azure. हाँ, उसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक
I नीचे think ऑप्शन आता है ना नीचे ऑप्शन आता है कंट्रोल डोमेन और वाला। एश्योरिटी एनरोल का। ठीक है, ओके। uh, Device management, obviously, so I can have a MDM only device or I can also have a co-managed device, और बाकी सब तो सेम ही है, कभी डेमो में नहीं दिखा रहा हूँ। एंड द नेक्स्ट इज हाइब्रिड एज्योर एडी जॉइंट। ये लास्ट, मतलब 3 प्राइमरी स्टेजेस अगर बोलते हैं तो यही है, एज्योर एडी रजिस्टर्ड, एज्योर एडी जॉइंट एंड हाइब्रिड एज्योर एडी जॉइंट। इसमें हम कौन से अकाउंट से साइन इन करते हैं डिवाइस पे? Corporate. Joy, this is Ramesh. I have a one doubt regarding Azure AD joined and Azure AD registered. Okay, can you go back to the Azure AD registered and Azure AD joined? So in the both slides, right, Joy. So we go with Windows settings, accounts, and access work our school account, and we will add that domain ID, and we will type our credential, and we will make it managed as a domain Azure AD join. So what exactly the difference, Joy? Because the same step I will follow on the both devices, No, right? you don't follow the same step. Okay. वेट, इसके लिए तो आई विल हैव टू, इसके लिए अभी तो मुझे एक वीएम बनाना ही पड़ेगा। वेट, जब तक इंस्टॉलेशन ना हो जाए इसका। नाउ ये जो virtual machine, it will come up. This is how a new device out of the box will come up, right? If we are doing autopilot, then that is a different thing. But this particular VM is now not in autopilot. So when it comes to the out of box settings, I will have the option to join it to Azure Active Directory from the out of box directly, or I can choose to continue with a local account. Correct?
Yes, Jim. So that is one way of getting your device in Azure Ready join state. So in this case, if I do it Azure Ready join from the out of box settings and my MDM user scope is set, or even if I'm part of both MDM and MM user scope, since I'm doing Azure Ready join, so it's a corporate enrollment scheme, it will get my device auto enroll to Intune. But here, uh, I will not do a automate. I will not do a ADJ from the out of box. I will just create a local account so that I can get to the doing it from the settings. Now the thing is that whether we are running Azure Ready Join from the out of box or from within Windows, it does not make any difference to us. The device will be tagged as corporate in either cases, and it will function as an Azure Ready device as it should. But there is a difference in how Intune sees the device in the back end, because so Intune clearly identifies whether the Azure AD join process is being run from out of box or from within Windows setting. I think I have that slide when we will be doing Windows Autopilot, but no. So here it asks me to sign up for your work or school. So if I do that, I can do it from here. This will do Azure AD join, but I do have an option to domain join this instead, and this is the way I will be able to get the local account set up on the device. So that is what how I will proceed in this case. This is what I hit. So here we get a lot of screens. These are exactly what we uh, get rid of using autopilot. There will be a lot of constraints and things like that. So surface किसके पास है? Any मेरे one of पास you तो नहीं have a है. surface? I don't have. Rajit, No joy. Ramesh, Gaurav, No, Jim. Yeah. Abhijit, you. No, sir.
उसमें कुछ अलग होता है क्या? अभिजीत नहीं नहीं। अभिजीत मुझे पता नहीं क्योंकि तुम अलग कंपनी से हो। तुम्हारे कंपनी में अप्रेजल साइकिल हो चुका? नहीं, अप्रेजल साइकिल अभी तक नहीं हुआ। मतलब होगा वो कि नहीं लास्ट होगा? क्वार्टर। हाँ, होगा होगा। वो लास्ट क्वार्टर में होगा, अच्छा नवंबर दिसंबर इस टाइम पे। अच्छा। नहीं मैं सिर्फ ये क्योंकि ये बाकी जो चार है सबका तो अप्रेजल साइकिल हो चुका। तो मैं सोच रहा था कि कोई अपने अप्रेजल में इतने पैसे मिले तो कोई सरफेस डिवाइस अगर खरीद रहा है तो। तो 2 साल भी जमा करेंगे ना फिर भी नहीं ले पाए। ऐसे मत ऐसा हुआ। बोलो। नहीं नहीं, ऐसा ही हुआ कंपनी इतना इतना है। पैसा देता है। मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ है। अच्छा इधर पे अभी आया तो सेटिंग्स पे अकाउंट्स में जाके ये जो एक्सेस वर्कर स्कूल है अगर इसमें हम डायरेक्टली कनेक्ट कर दिए तो देन व्हाट इट इज डूइंग। रजिस्टर। इसमें कनेक्ट करके अगर मैं साइन इन करूं तो इट विल डू एन एज्योरेडी रजिस्टर। इधर पे अगर मैं डायरेक्ट ईमेल एड्रेस दे दूं बट इसी के नीचे मेरे पास दो और लिंक है कि ज्वाइन दिस डिवाइस टू एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी एंड ज्वाइन दिस डिवाइस टू अ लोकल एक्टिव डायरेक्टरी। तो ये वाला लिंक में अगर मैं क्लिक करूं देन जाके जो साइन इन करूंगा देन दैट विल बी एन एज्योरेडी ज्वाइन। अभी रमेश आई थिंक यू क्वेश्चन कि प्रोसेस तो सेम है बट एग्जैक्टली मतलब डिफरेंस कैसे होता है। तो एक्चुअल प्रोसेस सेम नहीं है तो तुमको अलग जगह पे साइन इन करना होता है। Okay. क्या और उस क्लियर पे फॉर जब ऑल हम ना? ज्वाइन करते हैं जॉय तो वो ईएसपी के स्टेप्स भी चलते हैं ना फिर, वो हाँ 3 स्टेप। ईएसपी के स्टेप्स चलते हैं और इसमें ज्वाइन करने से ये ज्वाइन करके जैसे तुम्हारा ज्वाइन कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल गिव अ मैसेज कि योर डिवाइस इज ज्वाइन टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन फिर जब तुम क्लोज करोगे तो तुम क्लोज करके वापस तुम इसी यूजर सेशन पे आ जाओगे जो यूजर सेशन से तुमने इनिशिएट किया है। उसका ज्वाइनिंग को एक्चुअल में कंप्लीट करने के लिए यू विल नीड टू साइन आउट एंड देन साइन बैक इन विद द एज्योर एडी ज्वाइंट अकाउंट जिससे तुमने उधर पे साइन इन किया। ओके। है। नहीं, इसको ज्वाइन करके रखते हैं, रुको बाद में पॉलिसी दिखाने में काम आएगा। तो ये एज्योर आईडी रजिस्टर्ड होगा ना? ये जो आप ज्वाइन कर नहीं रहे हो ज्वाइन ये कर रहा एज्योर हूँ। आईडी हाँ। ये एश्योरेडी रजिस्टर्ड क्यों होगा अगर मैं इस पे क्लिक करके डायरेक्टली इधर पे अपना ईमेल टाइप करूँ। इधर पे हम्म। टाइप करके अगर मैं साइन इन करूँ देन इट विल गो एज अ एश्योरेडी रजिस्टर्ड डिवाइस। बट हम्म। मैं इधर पे नहीं साइन इन कर रहा हूँ। आई एम क्लिकिंग ऑन दिस लिंक जॉइन दिस डिवाइस टू एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी फिर जाके हम साइन इन कर रहे हैं। इवन दो आई हैव आई हैव माय ओन डिवाइस, मतलब तो उसमें भी हम लोग एज्योर आईडी ज्वाइन करवा सकते हैं इवन इफ हाँ आई। अच्छा, नहीं मुझे ऐसा लगा था कि एज्योर आईडी रजिस्टर्ड में आपका कॉर्पोरेट लॉगिन नहीं हो, मतलब कॉर्पोरेट लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर कॉर्पोरेट लॉगिन नहीं होगा तो मैं खाली एज्योर आईडी रजिस्टर्ड ही करा सकता हूँ ऐसा। वो दैट इज द केस फॉर द पर्सनल डिवाइसेस वेयर यू डोंट वांट टू साइन इन टू द डिवाइस यूजिंग योर कॉर्पोरेट क्रेडेंशियल। जैसे हम्म। कि मेरा पर्सनल लैपटॉप है मैं हाँ। उस लैपटॉप पे हम्म। वाई विल आई साइन इन विथ माय अटोस क्रेडेंशियल बट हाँ। उस लैपटॉप से आई मे स्टिल वांट टू एक्सेस सम ऑफ द अटोस रिसोर्सेज। तो हम्म। उस वक्त में मैं क्या करूंगा बिकॉज कंडीशनल एक्सेस है एंड आई विल नीड अ कंप्लायंट डिवाइस। आई कैन जस्ट एश्योरेडी रजिस्टर मतलब वर्क और स्कूल अकाउंट पे कनेक्ट करके डिवाइस को एश्योरेडी रजिस्टर किया। I will still be signing into the device using my personal credentials, not the Atos credentials.
बट मेरा एटॉस का अकाउंट जो है वो वर्क का स्कूल अकाउंट में एडेड रहेगा एंड विद दैट आई विल बी एबल टू एक्सेस द एटॉस रिसोर्सेज। अच्छा, तो एज्योर एडी ज्वाइन के लिए आपको ये मैंडेटरी नहीं है कि आप कॉर्पोरेट मतलब लॉग इन करो एज्योर एडी ज्वाइन के लिए। दिस इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग कि आप जो मतलब आप पर्सनल लॉगिन से भी आप कर सकते हो कंप्यूटर में लॉगिन, एंड देन यू चूज द ऑप्शन फ्रॉम द विंडोज सेटिंग टू बी कनेक्ट द डिवाइस टू एज्योर एडी ऐसा करके, एंड द डिवाइस विल बी शोन एज एज्योर एडी ज्वाइन, राइट? हाँ, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ गेटिंग द डिवाइस टू एज्योर एडी जॉइन स्टेट। हाँ, अच्छा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम स्टार्टिंग से ही मैं अपना कॉर्पोरेट अकाउंट से साइन इन करूंगा देन जाके वो आउट ऑफ द जब मैंने बताया था अ, जब ये वीएम सेटअप हो रहा था वो आउट ऑफ बॉक्स सेटअप स्क्रीन में था। उधर पे भी मेरे पास ऑप्शन था टू साइन इन विद वर्क और स्कूल अकाउंट। अगर मैं वहीं पे साइन इन कर देता तो इट वुड हैव डन अ एज्योर एडी जॉइन फ्रॉम द आउट ऑफ बॉक्स सेटअप। तब मेरे पास डेस्कटॉप नहीं आया था, मतलब द डिवाइस वाज स्टिल ऑन इज फर्स्ट और इनिशियल सेटअप। बट मैंने वहां पे साइन इन नहीं किया क्योंकि आई रमेश का क्वेश्चन था कि प्रोसेस सेम है एज्योर एडी जॉइन और एज्योर एडी रजिस्टर फ्रॉम सेटिंग्स का। तो वो दिखाने के लिए मैंने लोकल अकाउंट सेटअप करके फिर मैं इधर अंदर से एज्योर एडी ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ सर, क्लियर। तो इट विल आस्क लाइक मेक श्योर दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम क्लिक करके ज्वाइन कर देंगे तो ये डिवाइस में कुछ देर में ज्वाइन हो जाएगा। ईएसपी अभी इधर पे नहीं आएगा। तो यू आर ऑल सेट, इसमें हम क्लिक करके डन कर देते हैं तो दिस डिवाइस इज नाउ इधर पे दिख सकते हो कि एक्सेस वर्कर स्कूल में इट सेज दैट कनेक्टेड बाय एंड कनेक्टेड टू एज्योर एडी। ठीक है, इधर पे इन्फो आ गया, मतलब दिस इज डिवाइस इज आल्सो गेटिंग मैनेज्ड। ठीक है, इन्फो नहीं आता मतलब एमडीएम एनरोलमेंट नहीं हुआ। बट ये डिवाइस अभी भी साइंड इन विद द लोकल अकाउंट, तो इसका एज्योर एडी जॉइंट प्रोसेस जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। टू कंप्लीट द जॉइंट स्टेट इन दिस केस, ये सिर्फ इसी केस के लिए होता है when I am running the Azure AD join from the Windows settings. So I will have to sign out of the original user account with which I have signed in, and then next I will have to sign in with the Azure AD account that I connected. And this will complete the Azure AD join for this device. इसके बाद से I will be signing into this device using the corporate credentials only. But वो जो initial local account मैंने create किया था जॉय का वो भी रह जाएगा। एंड एज आई सेड, मतलब ये कंप्लीट होगा क्योंकि यू गॉट टू द ईएसपी। जो लोकल अकाउंट जब हमने सेटअप किया था कोई ईएसपी हम लोग के पास नहीं आया था, करेक्ट? यस। तो इसको ईएसपी में चलने दो, इसका अभी कुछ है नहीं। हम वापस चलते हैं इस पे। किधर गया पावर? तो डेमो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हाइब्रिड एज्योर एडी जॉइन स्टेट, हाइब्रिड के केस में क्या होता है कि वी आर साइनिंग इन विद अ क्या अकाउंट? So there is a difference between Azure AD registered and the Azure AD joint device in terms of sign in. The Azure AD registered के device के case में we can sign in with a local account. It can be like a local account or a Microsoft account like Outlook.com or a Hotmail.com. Right?
But in case of Azure AD joint, we are signing in with a corporate account. But अभी hybrid Azure AD joint case में भी we are signing in with a corporate account. So we further need to specify what type of corporate account we can sign in with. In case of Azure AD devices, we can sign in with a corporate account that is either a cloud account, means created in Azure Active Directory, or it's a synced account, means it's created actually on the on-premises AD and then synced back to Azure. So Azure AD joint case में we can sign in with both a synced account as well as a cloud account. But in case of hybrid Azure AD joint cases, when we are doing a sign in with a corporate account, we can only do a sign in with a synced account. We cannot do a sign in with a cloud account. Why? Because for a hybrid Azure AD joint state device, the authentication request is always going back to the Kerberos or to your on-premises Active Directory. And your on-premises Active Directory does not have cloud account. यही major difference है. Okay. Okay, sir. जॉय और एक बार समझाओगे ये चीज? ये समझ नहीं पाया ठीक से ये पोर्शन. हेलो. हाँ. मैं हाँ सुना सर, सुना ये तो पता है कि मतलब जैसे कि मैं हमारे सुना एनवायरनमेंट में. सुना रुक. हम्म. मेरा पेन किधर गया? एक मिनट रुक जाओ guys. मुझे iPad का के जो हम लोग का Azure AD रजिस्टर्ड डिवाइस है, जो यूजर अकाउंट से हम लोग साइन इन कर रहे हैं, इट्स अ लोकल अकाउंट या फिर इट्स अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट.
फिर विद इन द डिवाइस हम लोग का जो वर्क अकाउंट है तो वो कनेक्टेड है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी गेट एसएसओ टू द कॉर्पोरेट रिसोर्सेस। करेक्ट? ये पर्सनल केस में है, दिस इज ओनली फॉर पर्सनल। बट अभी दिस इज एन Azure AD domain joint device, तो ये Azure AD से ज्वाइंट है। यहाँ पे जो यूजर को साइन इन करना होता है, he needs to sign in with a corporate account, right? Yes. ये कॉर्पोरेट अकाउंट किधर से आ रहा है? Azure से आ रहा है। तो इट कैन बी अ क्लाउड अकाउंट, मतलब जो Azure पे क्रिएट किया गया हो। नहीं तो अगर तुम्हारा ऑन प्रेमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी है और उधर से सिंक हो रहा है, देन इट कैन ऑल्सो बी अ सिंक्ड अकाउंट, राइट? ये तुम्हारा क्लाउड डोमेन जॉइन सिनेरियो है, सीडीजे, विच इज बेसिकली कॉर्पोरेट ही ट्रीट करते हैं हम लोग। तो पहला वाला पर्सनल था, नाउ ये वाला कॉर्पोरेट हो गया। अभी आता है हाइब्रिड एज्योर एडी जॉइंट। हाइब्रिड एज्योर एडी जॉइंट भी तुम्हारा कॉर्पोरेट है। इसमें भी जो यूजर साइन करेगा, दे नीड टू यूज अ कॉर्पोरेट अकाउंट, राइट? बट ये कॉर्पोरेट अकाउंट एज्योर एडी का है कि किसका है? प्राइमरी Azure एंकर ऑफ हाइब्रिड एज्योर एडी जॉइंट डिवाइस कौन है? AD. ऑन प्रीमाइस एडीके। AD. Sorry. On- प्राइमरी एंकर एडी है। हम्म। तो इसमें जो भी हमको लॉग इन करना होगा इस डिवाइस पे, आई नीड टू लॉग इन विथ अ एडी अकाउंट, और एडी अकाउंट लॉग इन करूंगा मतलब आई नीड टू लॉग इन विथ अ सिंक्ड अकाउंट। यहाँ पे अगर मैं क्लाउड ओनली अकाउंट से साइन करने जाऊं तो ये साइन इन होगा नहीं, बिकॉज द क्लाउड यूजर हैज नो एग्जिस्टेंस इन एडी। समझ में आया? सो ऑन अ Azure AD registered device, I sign in with a local account. On a Azure AD joint device, I sign in with a corporate account that can be a synced account or that can be a cloud account. On a hybrid Azure AD joint device, I sign in with a corporate account that is only a synced account. Clear? Clear हुआ ना? Yes, sir. या है। चलो sleep में rest of mirror।
तो हाइब्रिड एज्योर एडी जॉइंट स्टेट में आ गए पे कंप्लीट। इसका भी डेमो मैं नहीं दिखा रहा, इसलिए दिखा नहीं पाऊंगा, मेरे पास एडी नहीं है अभी। हाँ, बट इसमें एक चीज याद रखने को है, हाइब्रिड एज्योर एडी जॉइन हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या आता है। नहीं, इसके लिए तो मुझे आईपैड चाहिए फिर। व्हाट डू यू मीन बाय अ हाइब्रिड एज्योर एडी जॉइन? Means it's hybrid to Azure, but it's authenticating to AD first. Means it's hybrid to Azure, it's AD. Neither, but authentication lies on primary on-premise domain. बिल्कुल। तो तुम ऐसे इतने अच्छे से समझ गए, मुझे आईपैड लाना ही नहीं पड़ा। गुड। तो hybrid Azure AD joint device does not mean that the device is joined to both Active Directory as well as Azure Active Directory. In reality, like तुम dsrec cmd command run करोगे, then you will see like Azure AD joint equals to yes and domain joint equals to yes, but it is actually ambiguous. It does not reflect the true state. You cannot join to both at the same time. Okay, so that is what Rajit correctly says. Microsoft more commonly refers to this process as hybrid to Azure AD join. Means the device having a relationship with Azure AD through the hybrid registration, but the trust anchor is still Active Directory, and this devices still requires the line of sight of the DC or domain controller. So because of this, we can understand that even though hybrid Azure Active Directory join is like a state from where you get both on-premise control as well as you get the benefits of the cloud, but because it is still having that trust anchorship with the on-premises, which makes it a legacy, and that is why a hybrid Azure AD joint state is never considered as the last state of a device in a modern management program. Right? That is why if you are on a journey where you are doing a digital transformation of the workplace, your end, like how will you know that you have reached the end of your journey, is when all of your Windows devices will come in the Azure AD joint state. If your devices are still in hybrid Azure AD joint state, then you are still not at the end of the transformation journey. Correct or not? बोलते ही नहीं हो कोई। Yes, sir. हाँ, ये जो है घंटा जो है ठीक है। डेमो तो मैं वैसे भी नहीं दिखा रहा हूँ, बट this is something that is for like when should you do hybrid Azure AD join, or not when, like why you should hybrid Azure AD join and why you should not do hybrid Azure AD join, as well as why you should do Azure AD join and why you should not do Azure AD join. So this is how it looks like. थोड़ा टाइम देके आप लोग पढ़ लो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ तब
Any questions इस पे? Joy, you highlighted in a bold about hybrid as already joined. It's, not the best choice for new devices if going with autopilot. हाँ, तो तो क्यों? अब यूजर क्लाइंट मांग रहा है कि नहीं मुझे चाहिए विद हाइब्रिड एज ऑलरेडी ज्वाइन विद ऑटो पायलट, तब तो मिस फर्स्ट अप्रोच तो यही है हमारा कि वी टेल टू द कस्टमर लेट्स मूव completely over the cloud, but due to some dependencies they don't want and they are not trusted with the Azure ready joined. They think that hybrid Azure ready joined is good, is enough, and from the security perspective. So that is why they are that not. is for that is for the customer. Hmm, That is for this particular customer. Now, that, in the hmm, world, there are multiple companies. अगर इंडिया में बात करें एंड इफ यू टॉक अबाउट वन इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री को पकड़ लेते हैं. वी हैव टाटा, महिंद्रा, Hyundai, and others who brings in new devices, who brings in new products, and they like to stay upgraded. They like to follow what the market trend is, and they move to that standards pretty soon. And then we have seen there are companies like Hindustan Motors, Ford, Martis, and things like that who couldn't keep up with the market trends and they disappeared from the market. So similarly, in every industry, there are companies who will try to keep modern, for whom they will like to go to cloud. And then there are companies who will not be very much appreciative of the idea of moving to cloud and modern, and they will still like to continue with what is legacy. But that particular customer trying to stay legacy, stating that it is enough for them to remain modern, is not what defines modern management is. So it does not change what Microsoft has identified the product. It does not changes the Microsoft support statement. It neither changes that hybrid Azure rejoin is not the best choice for doing autopilot. Clear? hmm, yes, in some extent you are right. But yeah, customer is not what is say, वो नहीं मान रहे, ऐसा हाँ, प्रॉब्लम. कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, कस्टमर नहीं मान सकता है. That is the problem of customer, but that does not changes the truth. And okay, How a great. product is how a product is created by Microsoft is very simple. Like Microsoft is the one who sells Active Directory and SCCM. Microsoft is the one who is selling Azure Active Directory and Intune. And Microsoft is the same company that is asking you to transition from the legacy system to the modern system. And while doing that, Microsoft knows that because you are their customer, you already have a legacy environment. So, how you should move to the modern environment is that you should adopt the modern environment for all new devices coming into the environment. So, if I am starting on a digital workplace project, I would first want to give a pilot of a completely fully cloud managed environment. I will do a pilot and then I will see how it compares with the legacy environment that I already have. Now, when I do a pilot, the modern
environment that I will configure will not have the exact set of policies that is there in the legacy environment, because some of the legacy policies may not be even needed now, or some of the things are carried or taken care of by different components now. So like for customers who say like I need every one of my group policy that is there, like they have thousands of group policies and they need all of the group policies in Intune, that is bullshit. Not required. There are device configuration profiles, there are settings catalog, there's a multiple ways of you can do a same thing. Your group policy is not required in a modern managed environment. But again, so I will do a pilot. I will see how it matches. And once that pilot gives me successful result, I will start bringing all the new devices which are now getting provisioned. I will start to have them in the modern environment. Whereas for existing devices which are AD joined, not managed with cloud, I will try to bring them to a hybrid arrangement so that they can also start getting benefit of the cloud world. And with every reset or reprovisioning attempt for an existing device, I will bring them to the new environment. That is how a migration process goes on. Now, how a company will be doing a migration process depends on how the architect has determined the processes and the project, or what the intentions of that architect is. Is the architect confident enough to go into the modern world? Then he will definitely design a solution that will take the customer to a modern world. If the architect is not confident using Intune and he is more confident of going with SCCM, then obviously he will draw a solution that is based on hybrid solution. That is exactly what happens. Agar we have had a architect for Atos back in 2018 जो hybrid पे believe करता था, then today Atos would also have been in a hybrid scenario. But we are a company with 110,000 more Windows devices who completely ditched away from SCCM Active Directory in one go and came to Azure AD joined into modern managed state and is successfully running that environment for all the last few years, is a testament that you don't need legacy environment to run a company. सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम्हारा खुद तो का जो कंपनी। तो जॉय आई हैव अ क्वेरी ओवर हियर। तो एसीसीएम में तो बहुत सारे मतलब एप्स रहते हैं जो आपके पकड़ लीजिए कि थर्ड पार्टी या मतलब बहुत सारे कस्टमाइज एप्स रहते हैं। तो इंट्यून में वो सारे कस्टमाइज एप्स डिप्लॉय कर सकते हैं कि मतलब इजीली मतलब विदाउट द ब्रिज और द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसीसीएम प्लस इंट्यून को मैनेजमेंट हम लोग डायरेक्टली सब कुछ एश्योर मतलब मतलब मॉडर्न मैनेजमेंट में लेके SCCM जा पे सकते हैं। इफ तुम अगर सारे एप्लीकेशंस को एट द वन गो, इफ यू रीपैकेज दोस एप्लीकेशंस फॉर इंट्यून, देन तुम एक ही टाइम पे पूरे एप्लीकेशन SCCM को डेप्लीकेट करके इंट्यून पे आ सकते हो। Now, if you have a plan that you want to go into Intune in a 10-year space, कि मैं हर साल एक एप्लीकेशन को रीपैकेज करूंगा एंड गेट दैट टू Intune, देन जैसे तुम्हारा टाइम ड्यूरेशन का प्लानिंग होगा वैसे होगा। At the end of the day, SCCM is also deploying the application, Intune is also deploying the application. Neither SCCM is creating the application, neither Intune is creating the application. Application package already created है, वो SCCM से deployed है, and most probably SCCM से deployed है, that means the application package is a .exe package. And we know that .exe package is not directly supported by Intune, so we have to repackage them as a Win32 application. So modern to
ये legacy to modern movement का one of the important aspect is the consideration of application repackaging. कितने दिन में I will have all my application packages ready to be deployed from Intune. ठीक है जॉय, लेकिन जब यहाँ पर एक ही चीज है कि हाइब्रिड एज्योर एडी ज्वाइन जो है ना, तो अभी जैसे हमारे टेनेंट में, ठीक है, सो द कस्टमर वांटेड टू नो जैसे कि एज्योर एडी ज्वाइन जो पीसीज होते हैं, तो दैट कैन बी आवर ओन पीसीज आल्सो, जिसको हम लोग वो कॉर्पोरेट जो आपने दिखाया, तो वैसे हम लोग वो कॉर्पोरेट आईडी देके ज्वाइन कर सकते हैं एज्योर एडी ज्वाइन बोल के। ठीक है, तो अभी हाइब्रिड एज्योर एडी ज्वाइन ये कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, बिकॉज दे वांट टू डिप्लॉय अ लॉट ऑफ पॉलिसीज, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज, जिसमें दे वांट टू हैव अ सिक्योरिटी पॉलिसी जहां पर कोई भी M365 एप्लीकेशन जो है वो आउटसाइड हाइब्रिड डोमेन ज्वाइन एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब जो जो भी मशीन्स हैं वो आउटसाइड हाइब्रिड डोमेन ज्वाइन, अगर मतलब अगर मशीन होंगे तो उसको आप that एक्सेस is मतलब हाँ। ये जो बात है these are coming from security perspective. मैं वही बोला कि this is हम्म, how the architect designs the environment. At the end of the day, it's how an architect will design the environment is what state of the environment you will be getting. हम्म, ऐसा कोई सिक्योरिटी कंपोनेंट है नहीं जो कि हाइब्रिड एज्योर एडी जॉइंट डिवाइस इज गिविंग यू एक्स्ट्रा दैट एज्योर एडी जॉइंट डिवाइस कैन नॉट गिव यू एक्स्ट्रा। वो हाइब्रिड एज्योर डिवाइस जॉइंट जो एचएडीजे डिवाइस है उसको एनक्रिप्टेड चाहिए, एज्योर एडी जॉइंट डिवाइस भी एनक्रिप्टेड होगा। तुमने उसमें जो भी तुम ग्रुप पॉलिसी डालोगे, सेम काइंड ऑफ पॉलिसीज, ग्रुप पॉलिसीज नहीं, एमडीएम पॉलिसीज कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम इंट्यून टू बी प्लेस्ड ऑन दोस डिवाइसेस। कौन सा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर है हाइब्रिड एज्योर जॉइंट डिवाइस दे रहा है? तुम हाइब्रिड एज्योर जॉइंट डिवाइस पे भी कॉर्पोरेट आईडी से ही साइन कर रहे हो, एज्योर डिवाइस पे भी कॉर्पोरेट आईडी से ही साइन कर रहे हो। कोई एक कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर तो होगा ना जिसके लिए हाइब्रिड एज्योर जॉइंट इज अ रिक्वायरमेंट। अपने कस्टमर या अपने आर्किटेक्ट को जाके पूछो कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर विच वी आर हाइब्रिड एज्योर जॉइंट एंड विच फॉर विच वी आर नॉट एबल टू गो टू एज्योर जॉइंट, कोई वैलिड आंसर नहीं होगा। इट्स बिकॉज दे हैव डिजाइन्ड इट ऑफ हाउ दे वांट इट टू बी। मैं अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स में काम किया है, इवन इफ द कस्टमर रिक्वायरमेंट वाज अ हाइब्रिड एज्योर जॉइंट, आई हैव नेवर डिलीवर्ड अ हाइब्रिड एज्योर। अभी अगर ऑलरेडी हाइब्रिड एज्योर एडी ज्वाइन कर लिए हैं वाया जीपीयू, मतलब टारगेटेड हाइब्रिड एज्योर एडी ज्वाइन जो होता है ना, तो लैपटॉप्स एंड हाँ, तो डेस्कटॉप्स के इफ लिए, यू आर और हाँ। गेटिंग इफ यू आर गेटिंग अ एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट जो हाइब्रिड एज्योर जॉइंट है एंड यू आर मैनेजिंग इट, देन तुम्हारे ऊपर कुछ है नहीं। बट हम्म। व्हाई वी आर लर्निंग दिस? हम ये विंडोज मैनेजमेंट और ये सब के ऊपर हम सीख क्यों रहे हैं? बिकॉज वन ऑफ द डेज गोइंग फर्दर यू विल बी द डिसीजन मेकर whether you want to do a hybrid Azure AD join or you want to do a Azure AD join. In that scenario, you must be in the position to decide that I don't need hybrid Azure AD join. तो अगर यहाँ पर एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है, और एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में ये जो आपने जो लेफ्ट साइड का डायग्राम दिया है, ठीक है, इसमें अगर हाइब्रिड एज्योर एडी ज्वाइन हो रहे हैं, मतलब लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स अगर एज्योर हाइब्रिड एडी ज्वाइन हो रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर स्टॉप गैप क्या है? अगर अगर ज्वाइन हो रहा है यहाँ एंड वी पे कैन, स्टॉप गैप नहीं है, यहाँ पे हो रहा है, बट दिस एंटायर सोल्यूशन इज अ स्टॉप गैप सोल्यूशन। मतलब इससे हम लोग ऑन प्रेमाइज एडी से हम लोग मूव नहीं कर सकते, मतलब ऐसा आप बोल रहे हो, मतलब देयर विल ऑलवेज बी अ डिपेंडेंसी। या इसमें से तुम कैसे क्लाउड पे मूव करोगे? विदाउट अ रीसेट और विदाउट अ रीसेट यू कैन नॉट मूव अ हाइब्रिड एज्योर AD join system to Azure AD join system. हम्म।
ये एससीसीएम को आज हटा के आज मतलब मेरा अगर अगर डिवाइस हाँ, आज अगर हम मेरा लोग ऑन डिवाइस प्रेमाइज एडी एक्टिव भी रख डायरेक्टरी जॉइंट है। आज मेरे डिवाइस एक्टिव, मेरे पास ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी हो सकता है। माई अकाउंट्स कैन कम फ्रॉम एडी। लेफ्ट साइड में जो राइट साइड में एज्योर एडी जॉइंट डिवाइस है उसमें भी है। आई हैव माई आइडेंटिटी इज कमिंग फ्रॉम एडी, but my devices are not anchored with AD. That is the difference. तो जो है अगर हम लोग मतलब हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें जो लैपटॉप मतलब जो फिजिकल लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स है वो हाइब्रिड एज्योर डोमेन जो है, ठीक है, लेकिन जो वीडीआईज है मतलब वो आइदर मतलब आपके AWS वर्क स्पेसेस हो या मतलब VMware हॉराइजन के VDIs हो, वो अभी तक एज्योर पे हाइब्रिड डोमेन ज्वाइन नहीं है। तो उसको तो हम लोग एज्योर एडी ज्वाइन कर सकते हैं एंड वी कैन मैनेज बोथ ऑफ देम बाय इंट्यून। मतलब अगर हम लोग इंट्यून एनरोल करते हैं मतलब इंट्यून में एनरोलमेंट होता है तो वी कैन स्टिल मतलब हाइब्रिड डोमेन ज्वाइन के भी एक अलग एनरोलमेंट होगा और जो एज्योर एडी डोमेन ज्वाइन है फॉर द उसके VDIs लिए एक अलग तो एनवायरनमेंट होगा। हाँ उसके लिए एक अलग एनरोलमेंट होगा, राइट, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल हम्म, एंड बोथ कैन बी मैनेज्ड बाय इंट्यून कंप्लायंस के हिसाब से या मतलब अगर ACCM और इंट्यून के साथ हम लोग को मैनेजमेंट करें तो if the device is discoverable in Intune and we have selected the ability to deploy the apps via Intune during the co-management configuration, then we can still be able to deploy the app into the VDI, right? हाँ, Acha, yeah, that's what I wanted to know. Yeah, thanks. ये तो ना मैं इससे पहले आगे जाऊंगा and we will look into the Azure DRS process. We are doing a signing in and Azure Active Directory से वो ID token डिवाइस को मिल चुका है। Now this shows a device doing a DRS process from the out of box screen, but the process that happens when we are running it from settings is also the same. Uh, जो हम लोग का डिवाइस है ऑन द डिवाइस, अभी एज्योर सब कुछ बोल दो, अगर मैं सब सिर्फ डिवाइस को जोड़ूं तो देन वी कैन हैव like segregate into the hardware, which is the bare metal of the device. On top of hardware we have the hardware abstraction layer, and then we have the kernel, and then we have the user space. So this is how the operating system and the hardware making up the physical device. Now on that user space there is a program that is called Cloud Experience Host, which is actually what is running your out of box experience. So the screen that you get on the on the display is the screen that is coming from this Cloud Experience Host program, and within that program is running another sub program that is called the Cloud Domain Join Web App. This is the web app which is basically going to go ahead and register or join your device to Azure. So it will call in dsreg.dll, that is the DLL file responsible having all the functions for Azure Join and Azure AD registration tasks and that. So if you uh, look into dsreg.dll functions, you will see these are all the functions that is there. And exactly this is how also like from dsreg.dll is where that command also comes from, dsreg cmd/status of how you get the join state of the device. So
This dsrec.dll will begin the discovery. Uh, and once the discovery URLs are found, it will send the joint request. And like on the device, if you want to debug that, we'll see event ID 100 for user device registration. The discovery request send operation was successful. So this is how it looks like in the event viewer. And similarly, there will be, since there is this is a request, so there will be a response, which is 103. Join request was successfully sent. So this is how the join request comes in. If you debug that certificate that is coming in with the request, you will see that this is the Azure AD device ID that gets stored on the device. So with the Azure AD join process now complete, the device then moves to the enrollment stage. So coming back to the same screen, so now we have a join success. So that status is set to dsrec.dll. So what it will do now is it will hand over the access token that it already had and the MDM discovery URL which it has got from the ID token from the first authentication, and it will hand it to the device enroller.exe. Device enroller.exe will initialize omadm client.exe, and omadm client.exe will go ahead and register a channel for the Windows notification server. So we have seen it on mobile devices as well, that before actually going ahead and enrolling the device to Intune, company portal first registers with the platform notification services. For iOS, it's APNS. For Android, it's the GMS. So for Windows, it's no different. It goes and registers with the platform notification services, which is WNS, Windows Notification Services. And once that is done, like the notification service channel is established, device enroller.exe will send the enroll request to Intune, and Intune will send the enrollment certificate back to the device. This is the Intune MDM device CA that we get on the device, and this is your Intune device ID. And then once the certificate is down on the device, it will bootstrap the OMADM client. Now, what does bootstrap means? Exposing the functionalities of OS No. with the CSP. Boot No. bootstrap means that Intune is configuring that particular client to contact with it only as the provider. So from now on, the OMADM client on the device will only consider Intune as its provider, and that is why a device cannot have multiple enrollment, because it can only be enrolled to a single instance. What Bootstrap basically is that from now on, Intune is saying that I am your master and you will need to obey my orders. And then the OMADM client will initiate the device management session. And as said, like if Intune wants to go ahead and communicate with the device, it will have to reach out to the platform notification services. And then we get the device in the ESP. So enrollment and registration is complete, and then it will go into the device setup and the account setup phases, where it will continue on implementing the policies that are applied to the device group or the user group, and we will come to the desktop. So that's the whole
Azure AD joint DRS process and the MDM enrollment process for Intune. Clear? I have a question, Joy, here. बोलो. Uh, uh, you said that it will give you a cloud experienced host. मतलब जब वो I'm assuming it, मतलब I am not, we have not gone to that step. जब branding के पेज के बाद वो signing का step आता है, for that we signs it to connect with that Azure AD. वो phase कहाँ पे खत्म होता है and when this securing of the of the device starts? क्योंकि just उसके बाद होता है या वो parallelly run करता है at the back end? Securing your hardware is about TPM ownership and TPM authentication. उसके बाद होता है joining your organization's network, which is the Azure AD DRS process. फिर होता है registering your device for mobile management, which is the enrollment process जो इस screen पे दिख रहा है. And last step जो होता है preparing your device for mobile management is when the device is waiting for the Intune management extension to get installed. और But cloud वो experience sign in host जो है from the moment you turn on the device और तुमको जो वो out of box screen का display मिलता है, select language and region. That entire out of the box screen जब तक तुमको desktop नहीं मिलता है, वो पूरा process जो प्रोग्राम के अंडर रन हो रहा है, दैट इज द क्लाउड एक्सपीरियंस होस्ट. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड क्लाउड एक्सपीरियंस होस्ट? क्योंकि ये जो भी स्क्रीन्स हम लोग डिवाइस पे देख रहे हैं, जैसे साइन इन या फिर चूज योर लैंग्वेज रीजन, कीबोर्ड लेआउट, जो भी है, ऑल द स्क्रीन्स आर नॉट लोकली, लाइक ऐसा कोई, क्या बताऊं, लाइक browser कोई से प्रोग्राम डिवाइस पे नहीं है, डिवाइस पे कोई लोकल प्रोग्राम नहीं है जहां पे रिट्रीव करके तुमको वो स्क्रीन दिखाया जा रहा है. क्लाउड एक्सपीरियंस होस्ट इज जस्ट लाइक अ बेसिक ब्राउजर जो कि बैक एंड में माइक्रोसॉफ्ट से जाके ढूंढ के वो पेजेस लाके तुम्हारे सामने से रेंडर कर रहा है. तो पहले जैसे तुमने साइन इन किए वो लैंग्वेज रीजन कीबोर्ड के तुमने जैसे साइन इन किया, साइन इन कंप्लीट हुआ और वो पूरे देर वो एक राउंड पे घूमता है. yes. वो जो थोड़े देर राउंड पे घूमता है is when basically it is going for that TPM ownership and things like that. उस स्टेप में एक्चुअली तुम्हारे डिवाइस पे वो Azure AD जॉइंट प्रोसेसर वो सब नहीं हो रहा है. तुम्हारे डिवाइस को ऑथेंटिकेशन अगर सक्सेसफुल है, वो आईडी टोकन मिल चुका है, बट इट इज नाउ ट्राइंग टू टेक ओनरशिप ऑफ द टीपीएम और उसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम जब ईएसपी पे एंटर करते हो, ऑलरेडी तुम्हारा सिक्योरिंग और हार्डवेयर स्टेप कंप्लीट हो चुका होता है. तो वो थोड़ा डिले है. ईएसपी एक्चुअल में रियल टाइम नहीं है. हाँ, क्योंकि जो है जब नॉर्मली हम लोग ईएसपी स्टार्ट करते हैं, ये पहले 3 स्टेप जो व्हाट आई हैव रेड, ये क्विकली फिनिश हो जाते हैं, ऑलमोस्ट खत्म. लास्ट स्टेप में सिर्फ ये आईएमई जब एक्सटेंशन वो डाउनलोड करके एक्टिवेट करता है, उसमें ही टाइम लगता है. तो दैट उसी वाज में द टाइम थिंक. लगता है, उसी में वेट करता है. क्योंकि उसके लिए उसको वेट करना होगा कि एजियो से वो पैकेज डिवाइस पे इंस्टॉल हो. इंस्टॉल होने के बाद वो पैकेज को इनिशियलाइज करना होगा. इनिशियलाइज करके जैसे ओमाडीएम क्लाइंट डॉट ई तो ये तो इनबिल्ट है डिवाइस का. इसको जैसे बूटस्ट्रैप किया, वैसे जो आईएमई क्लाइंट आ रहा है उसको भी इंट्यून को बूटस्ट्रैप करना होगा, ताकि ये जो आईएमई क्लाइंट है वो तुम्हारे टेनेंट से तुम्हारे एप्लीकेशन फेच करे, ना कि दूसरे किसी टेनेंट से एप्लीकेशन लेके आ जाए. और उसके बाद इसको फिर से वेट क्यों करना पड़ता है? बस ओमाडीएम क्लाइंट EXE और IME क्लाइंट जो है, दोनों मिलके
अपने अपने प्रोवाइडर सेट को पता क्वेरी कर करेगा कि उसके पास क्या क्या पॉलिसीज है जो इसको अप्लाई करना है. इट नीड्स टू रिट्रीव ऑल द लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन, ऑल द लिस्ट ऑफ पॉलिसीज, सब कुछ. उसी के बदले में प्रिपेयर करने के बाद ही जो ये एक रजिस्ट्री क्रिएट करता है, मैं दिखाऊंगा वो ऑटो पायलट के टाइम में. उसी के हिसाब से तुम्हारा अकाउंट सेटअप और जो डिवाइस सेटअप फेज है उस पे वो प्रोग्रेस दिखाता है कि वो जो एप्लीकेशन में दिखाता है इंस्टॉलिंग वन ऑफ लाइक जो 0 of 2 apps या फिर 0 of 3 apps, तो उसको पता कैसे चला कि इसमें 3 ही एप्लीकेशन है. वो जो पता किया वो यही स्टेप पे आके वेट करके वो सब पता किया. बट ये स्टार्ट वहीं से होता है जो है, वंस यू स्टार्ट साइनिंग इन दैट ईएसपी ऑलरेडी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, मतलब. हाँ, उधर से स्टार्ट होता है. ईएसपी डिस्प्ले लेट से आता है. ओके ओके. तो अभी हम लोग ने विंडोज मैनेजमेंट का बहुत कुछ पढ़ लिया. डिफरेंट जॉइंट स्टेट, डिफरेंट मैनेजमेंट स्टेट, ये जॉइंट प्रोसेस और एनरोलमेंट प्रोसेस सब देख लिए. तो अभी मुझे ये क्वेश्चन का जवाब दो. नहीं. सबको जवाब दो. एक बंदा नहीं. सबको क्या क्या लगता है? बाकी सारे No, sir, कॉल it's में भी not है कि only सो for गए? no, 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 sir. It's not only for mobile devices. Not only for mobile devices, or it's only about mobile devices, और it's not about mobile devices. इसमें difference है. क्योंकि डिजिटल वर्क प्लेस या फिर मॉडर्न वर्क प्लेस जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स आता है, इट इज नॉट अबाउट मोबाइल डिवाइसेस. ओके, फर्स्टली अभी तुम लोग बोलोगे क्यों? मोबाइल डिवाइस तो मॉडर्न वर्क प्लेस का पार्ट है. ऑब्वियसली मोबाइल वर्क प्लेस, मोबाइल डिवाइसेस इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न वर्क प्लेस. But when we are talking about transformation and transition projects, we need to keep in mind that mobile devices, they were the cause, the effect of which was digital workplace. मोबाइल डिवाइस अगर नहीं आता तो डिजिटल वर्कप्लेस नहीं आता. सो दे आर अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. बट if we look closer into this digital workplace programs, then it's more about moving an organization from the traditional management to a modern management. And abhi, if digital workplace programs are about moving an organization from traditional management to modern management, then mobiles का तो इसमें कोई बात आता ही नहीं है. Because the mobile devices from the beginning were always a part of modern management. Mobile devices were never traditionally managed क्योंकि traditional management में वो कैपेबिलिटी था ही नहीं, जिसके वजह से ना एमडीएम सॉफ्टवेयर आए. नहीं तो आज भी तो एससीसीएम ही चलता रहता. As such, for most of the digital workplace projects that we work in, it is क्या बोले, it is either about ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पे हम पीओसी पायलट ईओटी करेंगे जो न्यू मोबाइल डिवाइसेस रोल आउट होगा. नहीं तो इफ द organization is already using mobile devices which is managed by some third party MDM solution,
then it will be a migration from one UVM to another. But the entire solution set is a part of modern management from the beginning. AirWatch भी देखे तो it is also a modern managed MDM provider. Intune is also a modern managed MDM provider. यहाँ पे migration हो रहा है from one solution provider to another. It's not a migration from traditional to modern. But हाँ again तो फिर डिजिटल वर्क प्लेस में हम देखा कि इट्स नॉट अबाउट मोबाइल. फर्दर ये भी प्रूव्ड है कि एक एनवायरनमेंट में कितने भी बड़ा एनवायरनमेंट ले लो, मोबाइल डिवाइसेस आर नॉट द मेन ड्राइवर ऑफ वर्क. हो सकता है एनवायरनमेंट में 20,000 30,000 50,000 मोबाइल डिवाइसेस है, बट दे आर ओनली सेकेंडरी डिवाइसेस. सिमिलरली मैक्स भी अगर है हम लोग के पास, तो that is typically reserved for like either the C-level executives or special departments, जो कि they form a very small percentage of the device inventory, maybe 0.5% or even low. So mobile devices, Mac devices, they are not the main drivers of an environment. तो वहां पे जाके हम लोग को फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि if not Macs and mobiles, then from IT endpoint perspective, what is really the focus of a digital workplace, modern workplace transformation? तो हम पहले ही बोले मोबाइल डिवाइस तो इसका फोकस ही था नहीं, क्योंकि मोबाइल डिवाइसेस वेर ऑलवेज पार्ट ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट सॉल्यूशन. तो उनसे केस में कोई भी एनवायरनमेंट ले लो, you will see that Windows devices are the primary drivers of, and in such cases Windows device is also which is the focus of the digital workplace transformation project, क्योंकि Windows devices are the only devices जो कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट सिस्टम का भी पार्ट था और जो कि मॉडर्न मैनेजमेंट का भी पार्ट हो सकता है. एंड अ डिजिटल वर्कप्लेस जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है, इट इज अबाउट मूविंग दोज विंडोज डिवाइसेस फ्रॉम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट टू मॉडर्न मैनेजमेंट. राइट, यही तो एक डिजिटल वर्कप्लेस प्रोजेक्ट का मेन काम पे आता है कि जो तुम लोग डिजिटल वर्कप्लेस प्रोजेक्ट में काम करते हो कुछ और भी आता है. ये अच्छा. So when we talk about moving Windows devices from traditional management to modern management, we are talking about moving multiple scenarios or multiple things. So from configuration manager to Intune, from Active Directory to Azure Active Directory, from a custom image to a OEM image, from corporate network connection to any internet connection, from on-premises security tools to cloud security tools, from um, on-premises application store to a cloud store, and from Windows Server Update Services to Windows Update for Business. Right? This is what we are talking about. So इसी सिनेरियो में now if I say कि हाइब्रिड एज्योर एडी जॉइंट डिवाइस को तुम लोग लाओ, तो वो किधर पे पड़ता है? हाइब्रिड एज्योर एडी जॉइंट सिनेरियो ना तुम्हारा ट्रेडिशनल में पड़ता है ना तुम्हारे मॉडर्न में पड़ता है, वो बीच में लटका हुआ एक हिस्सा है.
तो अगर तुम्हारा कस्टमर का रिक्वायरमेंट भी है कि हाइब्रिड एज्योर रेडी जॉइंट सिनेरियो, हो सकता है। डिपेंड करता है उसका आर्किटेक्ट जो है उसको कितना पैसा मिला है, वो गुस्से में था कि ऐसे सोल्यूशन कर दिया कि क्या हुआ, बहुत कुछ रीजंस हो सकते हैं। कंपनी का पैसा, कंपनी का जो टेक्निकल डिसीजंस लेता है वो कितने कैपेबल है, बहुत कुछ होता है उन सब में आके है। लेकिन जब हम इधर पे सीख रहे हैं कि व्हाट इज द स्टेट, तो हम लोग देख रहे हैं कि इट्स इधर लेफ्ट और इधर राइट, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। और हाइब्रिड जो आता है वो बिटवीन वाला सिनारियो है, और ये बीच वाले पीपल, दे आर नॉट गुड। ये रिकॉर्डिंग किसी बाहर पे मत कर देना, नहीं तो मैं वायरल हो जाऊंगा और एलजीबीटी क्यू वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। Yeah. सौरभ क्या करे? सच में कभी कर मत दियो, घर के बाहर दंगे हो जाएंगे। नहीं नहीं, हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं जो है हाइब्रिड में फंसे हैं ना हम लोग। और सौरभ हाँ, अच्छा। जॉय तो बोल रहा था कि आप पैचिंग पैचिंग भी कैसे करते हैं, मतलब वो भी आप दिखाओगे क्या, मतलब वाया इंट्यून वाया द मॉडर्न मैनेजमेंट? हम्म, तो अगर मैं मॉडर्न मैनेज सिनेरियो पे सिर्फ इंट्यून क्लाउड ओनली सिनेरियो पे आ गया, आई विल हैव टू डू पैचिंग फ्रॉम क्लाउड आल्सो। हम्म। Delay in patching is one of the most important aspects of why we should move from traditional management to modern management, because जैसे राइट साइड में लिखा हुआ है, 1 in 10 enterprise takes a year or more to deploy Windows patches। जहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड पे we roll out patches every month, we just stay on the, जैसे ये सितंबर आया है, सितंबर का सेकेंड ट्यूसडे विल बी 12th ऑफ सितंबर। 12th ऑफ सितंबर में जो माइक्रोसॉफ्ट पैच रोल आउट करेगा, our devices will need to get those patches installed within 15th of September, नहीं तो from 18th of September, that is the next Monday, devices will start to turn up as non-compliant and will be blocked from conditional access. That is how fast we patch with cloud. Okay. So next slide is, जो बोलते हैं ये, this is for those decision makers जो like, why do I need to go to modern, why cannot I stay with the legacy system that I have on premises. So with the current system, on premises legacy system, you do have traditional OS deployment, Win32 app management, configuration group policy, BitLocker, hardware and software inventory, and update management. But for all the rest of the things, uh, multiple platform support, risk-based access control, autopilot, advanced threat and security, telemetry, complete app management, and integrated full stack of M365 management, you do not get it with your legacy systems. The same is true if you then say, okay, we will move to a state that is called as tenant attached. Then also it does not improves anything, because tenant attached does not makes your devices managed from cloud. It only makes those devices appear in the cloud portal. The devices are still managed by your legacy system. So we come to the next stage, which is cloud attached. This one is called, previously this one is what was called as co-management. New name is cloud attached. But cloud attached and co-management are both.
uh, like can be said at the same time, no issues. And this can be one of your end goal points, because if you are in a cloud attached state, you are basically getting the benefits of everything, like get the benefit of traditional OS deployment to the cloud securities and everything. But the real, like if you say a complete modern cloud only solution, then that is cloud managed. And obviously in cloud managed, if you see, the traditional OS deployment support is gone, because we cannot do a OS deployment to a cloud managed device. So that is your another goal point. So when we are moving from traditional management to modern management, uh, these two are our only goal points. Either I will stop at a co-managed state or I will stop at a cloud managed state. But इधर पे वो क्वेश्चन आता है कि को-मैनेज स्टेट्स को बहुत लोग हाइब्रिड एज्योर जॉइन के साथ कोरिलेट कर लेते हैं, लाइक इफ इट इज अ को-मैनेज देन इट इज अ हाइब्रिड एज्योर जॉइन, जिसके लिए मैंने पहले वो क्वेश्चन किया था कि फॉर अ डिवाइस टू बी इन अ को-मैनेज स्टेट, do I need the device to be in a hybrid Azure AD join state? The answer is no, I don't need to, because a cloud only device like Azure AD join device can also be co-managed. यही है. So now say for example we are currently on the on-premises and we need to reach a modern managed state, either like a co-managed or a cloud managed. How we will do that? So we come to that same picture that we saw earlier, from traditional to modern. एंड यहाँ पे जो मैंने बोला था ना, वो जो आई हेट द बीच वाला पोर्शन, इवन इफ आई हेट दैट बीच वाला पोर्शन आ ही जाता है, एंड यू गेट समथिंग दैट इज कॉल्ड एज दिस वाला सिनेरियो. राइट. तो लास्ट में this is what your traditional current setup is. The current mode of management, AD joined, SCCM managed. You need to move to future mode of operation. Then one of your scenarios जो पहले भी बोला था, that is modern cloud managed. So all devices are pure cloud, no SCCM, no com management. And then you can also have co-management brought in, but devices are still pure cloud, no hybrid Azure AD join. And this is only if you want to continue with the SCCM infrastructure instead of deprecating it. But तुम ये जो लेफ्ट साइड से राइट साइड का कोई भी स्टेट में तो जाओगे, you need a bridge go to that, and that bridging is where the hybrid Azure AD join state comes in, which is the intermediate mode of operation. But when you move from intermediate mode of operation to the future mode of operation, your devices will go through a reset, because without a reset I cannot change the hybrid Azure AD join state to Azure AD join state. मतलब कर सकते हैं, but माइक्रोसॉफ्ट के सपोर्ट के लैंग्वेज पे नहीं कर सकते. So Joy, if I have in my environment, ठीक है, so we are planning for a co-management, right? तो आपने जो ये diagram दिखाया, bridge to modern, so that is actually which we are planning for, and the devices are already hybrid Azure ready joined, ठीक है.
तो अभी हम लोग को मैनेजमेंट करेंगे, फिर उसके बाद अगर हम लोग को मतलब अगर मॉडर्न क्लाउड मैनेज करना चाहे, देन वी नीड टू रीसेट ऑल दोस 1000 डिवाइसेस, मतलब जो 1000 या जो भी 2000 डिवाइसेस है, लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप जो हाइब्रिड एज्योर एडी जॉइन दिखा रहे हैं, अभी डोमेन जॉइन दिखा रहे हैं, तो उसमें हम लोग को रीसेट करना पड़ेगा, राइट? रीसेट करना मतलब पड़ेगा ये। मतलब वो एंड ग्रुप पॉलिसी से ही आपको डीएस रेड सीएमडी वाला जो कमांड है, वो डीएस रेड सीएमडी वाला कमांड चलाना पड़ेगा, एंड देन यू नीड टू मतलब आज दी यूजर टू, और एनरोलमेंट हम लोग दोबारा से करेंगे, ऐसा कुछ। हाँ, इसमें से अच्छा, डीएसरेक्स सीएमडी कमांड चलाना क्या क्यों है? डायरेक्ट लोकल आईटी के पास लेके जाएगा, वो उसको रिसीव यूएसबी डाल के न्यू ओएस इमेज डाल देगा, एंड आउट ऑफ बॉक्स से दे विल एनरोल टू क्लाउड। नहीं अभी पीपल विल वोंट अलाउ ना, मतलब वो चीज तो नहीं कर सकता, मतलब हाइब्रिड डोमेन ज्वाइन जो यहाँ पर है, तो उसमें एज्योर एडी कनेक्ट पे कॉन्फ़िगरेशन है, और टारगेट डिप्लॉयमेंट में जो रजिस्ट्री फिक्स जाता है ना आपके डिवाइसेस पे, अब ठीक वो है, तो तो वो तुम्हारे एनवायरनमेंट में तो नहीं, तो कंडीशनल एक्सेस अटका देगा। तुमने क्वेश्चन किया हाँ कि हाँ, अगर तुमको मूव करना है तो देन यू विल रन द डीएसरेक्स सीएमडी स्टेटस एंड देन यूजर विल हैव टू एनरोल अगेन। मैं हम्म। उसके पे बोला कि डीएसरेक्स सीएमडी कमांड चलाना क्यों है, उसको डायरेक्ट रीसेट मारो। हम्म। Joy, I have one question here because of this. So, if we want to move from hybrid to completely Azure AD joint में मतलब co-management से this cloud native solution में, then we need to do a device reset and reimage it. For in case for hybrid Azure AD joint, in case में where we have the existing devices और जो हमें Intune पे move भी करनी है, तो we can do it by GPO and whatever enrollment methods we have discussed. लेकिन अगर और नई डिवाइसेस के लिए हम ऑटो पायलट के लिए जा सकते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग विच यू सेट इज रिकमेंडेड प्रोसेस. बट अगर हमें क्लाइंट कह दे, मतलब इफ द कस्टमर कम्स टू अस कि हमें एग्जिस्टिंग डिवाइसेस को भी आगे ऑटो पायलट के लिए एनरोल करना है, तो कैसे किया जाएगा? जो ऑलरेडी को मैनेज मतलब हाइब्रिड मेजोरिटी ज्वाइन हो चुकी हैं और वो को मैनेजमेंट में भी आ चुकी हैं, अब उनको लोगों को ऑटो पायलट उनके प्रोफाइल पहुंचे, उनको उसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? उसके लिए क्यों कुछ, मतलब तुम लोग क्यों कुछ भी करोगे? इसलिए क्योंकि मतलब मान लो डाउन द लाइन अगर वो डिवाइस को रीइमेज या रीसेट करना पड़े तो, हाँ, या उसको क्रैश ऑटो हो जाए. पायलट प्रोफाइल मिल लेता है ना। हाँ तो हाँ. तुम्हारा जो ऑटो पायलट प्रोफाइल है उसमें तुम वो कन्वर्ट ऑल टारगेट डिवाइसेस टू ऑटो पायलट डिवाइसेस उसको सिलेक्ट करके रखोगे अगर, वो एक टॉगल रहता है, राइट? वो ऑन करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब वो रीसेट होगी तो उसको मिलेगी प्रोफाइल। तो 24 to 48 आवर्स में इंट्यून खुद उसको रजिस्टर कर देता है हम्म, ऑटो पायलट, प्रोवाइडेड कि तुम्हारा जो को मैनेजमेंट का कॉन्फ़िगरेशन वर्कलोड है वो इंट्यून पे स्विच ओवर है। ओके. अगर तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन वर्कलोड इज सेट टू एससीसीएम, मींस इंट्यून तब जाके उसको ऑटोमेटिकली रजिस्टर नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास वो राइट्स ही है नहीं। Sure. नेक्स्ट और है, any other हाँ बोलो prerequisites that we need to follow in that इसके अलावा? ना, ओके ओके. ना काफी है। एग्जिस्टिंग डिवाइसेस को ऑटो पायलट रजिस्टर करने का तो बेस्ट वे वही है कि खुद से क्यों हैश कलेक्ट करके उसको रजिस्टर करे, ऑटो प्रोफाइल को ही डिप्लॉय कर दो उस पे। मतलब यू डिप्लॉय द ऑटो, हाँ इसमें ये है कि ऑटो पायलट प्रोफाइल शुड नॉट बी डिप्लॉयड टू योर ऑटो पायलट डिवाइस ग्रुप। ऑटो पायलट डिवाइस को यू विल नीड टू डिप्लॉय इट टू ऑल डिवाइसेस। अंडरस्टूड. बट जो है समझ लो कुछ मॉडल्स हैं जिनको हमको कन्वर्ट करना है इनटू ऑटो पायलट। ओके, तो जो अभी करेंटली क्या है कि अगर कोई प्रोफाइल ऑटो पायलट ग्रुप इस पे टारगेटेड है,
ओके, जो कि डायनेमिक ग्रुप है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, सॉर्ट ऑफ सम डिवाइसेस वी कैन जस्ट ऐड इन अ वन डिवाइस ग्रुप, टारगेट टू दैट प्रोफाइल, एंड फ्रॉम द प्राइमरी डिप्लॉयमेंट प्रोफाइल हम इसको एक्सक्लूड करके रखें। हाँ, वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा सॉल्यूशन सही है फिर। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट चीज है कि हम लोग ने ये मैनेजमेंट और ये सब के बात किया, तो नेक्स्ट इज हाउ पॉलिसी प्रोसेसिंग इज डन ऑन विंडोज। पॉलिसी प्रोसेसिंग का बात जब आता है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड a bit about CSP। तो यहाँ पे 3 सिनेरियोस का मैं बात करूंगा। नॉर्मली एज ए इंट्रोडक्शन अगर बोला जाए तो एंटरप्राइजेस रिलाई ऑन either ग्रुप पॉलिसी और MDM to configure and manage the devices. Group policy is your legacy traditional way, MDM is your modern way. For devices running Windows, in order for these devices to be managed and configured with MDM, we need CSPs or configuration service providers to help manage the device. So CSPs are nothing but policies or particular areas of configurations which can be configured on a device. So it's basically an interface between the configuration settings that are specified in a provisioning document and configuration settings that are on the device. Similar to group policy client side extensions, जिसको भी ग्रुप पॉलिसी पता हो, मतलब पहले मैनेज किए है, तो हम जो ग्रुप पॉलिसी क्रिएट करते हैं और एडी पे और जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दैट इज द सर्वर साइड बोल सकते हैं या एडमिन साइड बोल सकते हैं, यूआई बेस्ड जहाँ पे हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं। बट ऑन द डिवाइस वो ग्रुप पॉलिसी जो हम क्रिएट किए अप्लाई कैसा होता है इज वाया दी ग्रुप पॉलिसी क्लाइंट साइड एक्सटेंशंस। तो सिमिलरली इंट्यून पोर्टल में हम जो पॉलिसी क्रिएट करते हैं दोज आर एमडीएम पॉलिसीज फॉर श्योर, बट वो एट द एंड डिवाइस पे जाके कैसे इफेक्ट होता है इज बिकॉज ऑफ द सीएसपीज। बेसिकली मतलब यही है कि इंट्यून से जो सिंकएमएल कमांड आता है वो एमडीएम क्लाइंट रिसीव करता है एंड दे पार्स दैट कमांड। उसमें वो देखता है कि कौन से सीएसपी के लिए वो इंटेंडेड है एंड बेस्ड ऑन दैट इट विल इन्वोक दैट सीएसपी and the CSP will make the required changes in the registry to get the settings configured. ऐसे CSP काम करता है। नाउ इसमें सेकंड केस लाते हैं, इन अ क्लाउड ओनली को मैनेजमेंट सिनेरियो, मतलब डिवाइस एज्योर एडी ज्वाइंट है और उसमें को मैनेजमेंट भी हो रहा है, तो नाउ एससीसीएम भी इसमें आ जाता है। तो एससीसीएम इसमें क्या यूज करेगा, एससीसीएम को भी इसमें सीएसपीज ही यूज करने होंगे। So for that they use something called the WMI to CSP bridge जो कि common device configurator है। तो Intune का policies MDM client को hit करता है क्योंकि MDM client will only listen to Intune. MDM client won't listen to SCCM as a provider. इसमें क्वेश्चन है कोई?
No, Joy. अच्छा, तो ये पहला वाला जो सिनेरियो था, दिस इज प्योर क्लाउड प्योर इंट्यून. नाउ दिस इज प्योर क्लाउड को मैनेज्ड. एंड अभी वाला जो सिनेरियो है, दिस इज हाइब्रिड एज्योर एडी जॉइंट को मैनेज्ड. इसमें वी गेट ग्रुप पॉलिसी एज वेल, और इसमें वी गेट सीएसपी एज वेल. तो ताकि ग्रुप पॉलिसी और सीएसपी में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसमें हम लोग को क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है? जीपी I विंस ओवर एमडीएम पॉलिसी. MDM is open priority. वो पॉलिसी सेट करना पड़ता है ताकि इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ना आए. ठीक है, तो यही है सीएसपीज. बस आज का इतना ही. आज का और कुछ नहीं है. तो कोई सवाल है तो पूछ So, सकते हो. Joy, here the question, Joy, which I have. So, group policy, we have like computer configuration, user configuration. So, we know that some settings which are related to desktop settings or network settings, something like that. So, how we can easily understand the CSP policies which required for the required operation. So, do we have any standard method to remember, Joy, to configure CSP policies? The thing is, previously how we configured group policies is not how we created MDM policies. Previously, we only had templates where we created policies like this, and each of the policy settings that we create here maps to a ESP that is documented by Microsoft in here. So you have so many CSPs on the device. So for example, if we are configuring BitLocker, then obviously we are hitting the BitLocker CSP. And these are all the settings that we can do. And these are all the settings that is mapped to whatever you do in the policy in here. I think BitLocker comes in endpoint protection. Windows encryption. So all the settings that you see here will map somehow to the CSPs in here. But now, instead, so for example, those profiles and policies that are already created, those will remain created. But if we are creating any new policy, we should try to create a policy of the type settings catalog, because this is how most of the policies in future for Microsoft will move. So no new features are added into the templates anymore. Everything is coming into settings catalog. And if you go by this, then the way you configure a settings catalog is exactly how you previously used to configure group policy. Okay. Joy, I have a question here because since we're discussing about policies, how effective is Hmm? this then GPU analytics
for GP migration. analytics is something that you do is where you get a extract of all the group policies and you come upload that in Intune group policy analytics and it will show how much of those policies or profiles are or can be created natively with Intune. So if you look into this structure again, the way group policy is affected on the device is via DLL files. And the way MDM policies are affected on the device is via the CSP. So your group policy analytics is giving an estimation of how many DLL file equivalents are already present in the CSPs. But it does not state like does not state like मतलब समझ जाओ मैं हो गया हाँ मैं समझ गया, मतलब मैंने वी डिड इट विन वन प्रोजेक्ट, हमने एक्सपोर्ट करी जीपीओ, हमने एनालिटिक्स लिया और उसमें माइग्रेशन का परसेंटेज आता था कि 80% आर इफेक्टिव और नॉट। बट वो माइग्रेट हम जब करेंगे, मतलब वी हैव नॉट डन, तो वो क्या सेटिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है? व्हाट डज दे अप्लाई टू, हाउ हाँ डज हाँ दे? रजित, मैंने किए हैं दोज आर ट्रांसफॉर्म इन द सेटिंग्स एज अ सेटिंग सेटलॉग। जो सेटिंग सेटलॉग में हम सेलेक्ट करते हैं ना, सेम वैसे ही आ जाएगा। और यू कैन एडिट एंड मॉडिफाई दोज एज वेल। अगर तुमको आगे नहीं चाहिए वो सेटिंग, यू कैन मॉडिफाई एज वेल। ओके ओके, थैंक यू। ये मैंने किया है, अगर तुमको चाहिए होगा तो मैं वो दिखा दूँ। तुम्हारा वो टेम्पलेट नहीं क्रिएट करता है। हाँ, टेम्पलेट नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन सेटिंग्स कैटलॉग जैसा वो सेटिंग बना के दे देता है। हाँ क्योंकि तुम्हारा सेटिंग्स कैटलॉग पे ही मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तुम ग्रुप पॉलिसी भी जैसे क्रिएट करते हो यस। वैसे एग्जैक्टली सेम जाके तुम इधर पे विंडोज कंपोनेंट्स के अंदर या डेस्कटॉप या कुछ भी जो भी चाहिए तुमको तुम सेटिंग्स कैटलॉग में भी वैसे ही करते हो। तो वो इजीली इधर पे करते हैं एंड इट इज रिकमेंडेड कि अगर इफ वी नीड टू क्रिएट न्यू प्रोफाइल्स नाउ जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का एटॉस का डिनर जो था उस टाइम पे सेटिंग्स कैटलॉग नहीं था तो हम लोग का मोस्ट ऑफ द प्रोफाइल्स वो टेम्पलेट्स पे ही था मतलब डिवाइस रेस्ट्रिक्शन या एंड पॉइंट रेस्ट्रिक्शन वैसा करके। बट एविडेंट का जो न्यू टेनेंट बना वहां पे आई हैव मूव्ड मोस्ट ऑफ द सेटिंग्स विद द सेटिंग्स कैटलॉग क्योंकि दिस इज द न्यू वे। और इसमें बहुत सारे होते हैं टाइम में कि पहले होता था ऐसा कि टेम्पलेट्स में जो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन हम क्रिएट करते थे उसका मतलब सीएसपी में इधर पे सीएसपी में अगर हम देखेंगे तो देयर इज अ सीएसपी अवेलेबल बट इंट्यून में उसका सेटिंग्स अवेलेबल नहीं था जिस टाइम पे हम लोग को कस्टम ओमा यूआरआई पॉलिसीज क्रिएट करना होता था। बट अभी मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे ही तुम्हारा सीएसपी इधर विंडोज में ऐड होता है विंडोज हर अपडेट के साथ बिकॉज सीएसपी का वर्जन्स वो चेंज होता है या फिर नया सीएसपी ऐड होता है सो लाइक व्हेन द नेक्स्ट विंडोज 11 कम्स आउट देयर माइट बी अ फ्यू मोर सीएसपीज दैट विल गेट एडेड टू इट। तो वो सारे क्या होते हैं तुम्हारा टेम्पलेट्स में आएगा नहीं बट सेटिंग्स कैटलॉग में ऑटोमेटिकली डे 0 से ऐड हो जाता है तो इधर से तुमको मिल जाएगा वो। But यही है पॉलिसी प्रोसेसिंग एक मतलब बिटलॉकर के एग्जांपल लेके आई विल शो लाइक हाउ डू यू एक्चुअली ट्रेस अ पॉलिसी ऑन द क्लाइंट एंड पॉइंट एंड ट्रबल शूट बट वो अजय आज आज आप क्या दूसरा कोई सेटिंग्स दिखाएंगे क्या? मतलब आई नीड टू गो नाउ। दूसरा कुछ सेटिंग्स आप दिखाएंगे अभी? नहीं आज का सेशन कंप्लीट हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। देन कैन आई जस्ट मूव आउट फ्रॉम दिस मीटिंग? हाँ हाँ ओके। ठीक है, थैंक्स थैंक्स जॉय, थैंक्स अ लॉट।
चलो तो फिर तुम लोग के लिए भी